आरबीआई गवर्नर ने रिसेंटली कहा था कि इंक्रीज इन रेट इज अ नो ब्रेनर। तो इसका मीनिंग है कि श्योरली रेट्स इंक्रीज होने वाले हैं, और जो एक्सपेक्टेड है ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ पॉलिसीज शायद 125 बेसिस पॉइंट्स टू 150 बेसिस पॉइंट्स। और इस पॉलिसी में जो कल अनाउंस करेंगे, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिनिमम 25 बेसिस पॉइंट्स होगा, बट मोस्टली 50 हो सकता है। और आई मीन ओवरऑल बैंकिंग स्पेस पे तो मैं पॉजिटिव हूँ, एंड स्पेशली द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स सच एज कोटक और HDFC बैंक. So I think these are the ones to be bought at slightly lower levels जब भी market correct करता है, because market is currently in a sort of a correction zone. So नीचे आए तो लेना चाहिए. मैं तो होपफुल है कि पॉसिबली बाय दिस ईयर एंड शायद जो भी इंक्रीज इन रेट्स होना था शायद हो जाएगा, क्योंकि इवन फॉर आरबीआई देयर आर एटलीस्ट 3 मोर पॉलिसी मीटिंग्स, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स इन कैलेंडर ईयर कैलेंडर ईयर 2022. तो शायद उसके अंदर जो भी इंक्रीज करना था कर लेंगे, एंड होपफुली इन्फ्लेशन शुड बी अंडर कंट्रोल बाय द ईयर एंड, क्योंकि बाय दैट टाइम hopefully the Ukraine-Russia war also should get sorted out to a certain extent, and overall शायद हम लोग देखेंगे कि inflation would be under control. So I think that could be one of the triggers for the market going ahead, but the next few months still looks a bit difficult for the markets. मैं तो बोलूँगा 2022 कैलेंडर ईयर इज अप्रोप्रिएट फॉर बाइंग, क्योंकि यदि यहाँ से मार्केट करेक्ट करता है, जैसे कि अभी बता रहे थे कि पॉसिबली 16,200 इज अ गुड सपोर्ट, और वहां से यदि टूटता है, then I think markets can go to levels of about 15,500. I think that will be a very good level to buy for long term. क्योंकि यदि आगे देखते हैं for India as such, the sort of growth which we are talking of, I think the next 2 to 3 years plus should be excellent for the markets. तो ये एक अच्छा opportunity रहेगा over the next few months to buy and really fill up your portfolio. मुझे लगता है कि अभी भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो इश्यूज है वो तो रहेंगे. फॉर एग्जांपल एट्रिशन रेट इज वन, बट द इशू इज द हायरिंग कॉस्ट एंड एचआर कॉस्ट. वो अभी काफी बढ़ गए हैं फॉर द आईटी कंपनीज ओवरऑल. एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ द सॉर्ट ऑफ स्लोडाउन व्हिच यू आर टॉकिंग ऑफ इन यूएस, उसके कारण जो उनके ऑर्डर्स थे, आई थिंक देयर विल सी अ स्लोडाउन. Although the managements have been quite positive about the order flows, और उसके हिसाब से stocks चले थे post the earnings based on the management commentary. पर overall मुझे लगता है कि अभी भी वो slowdown रहेगा in order flows. I think that will be felt over the next 2 to 3 quarters. So if you're talking of the next 2 to 3 quarters, I mean I would avoid IT for the time being, and possibly around September, October, or maybe closer to December is the time I would again look at buying IT. Auto, FMCG. I mean, these two sectors to be benefited to a very large extent. Or as far as infrastructure is concerned, anyway, government has been spending a lot in the last 2 years. So infra story continues, no doubt. But then because of rural recovery, we'll see FMCG and auto being benefited. So what are you buying in FMCG and auto space, Amrish? FMCG, I'm clearly buying stocks like HUL, which is the leader anyway, ITC, which we just talked about, and among the slightly smaller ones, not very small, slightly smaller ones is Dabur, which I like because of the Ayurvedic story, which has taken off extremely well post-COVID. And auto space? Auto space, again, the leaders like Maruti and Tata Motors. I mean, these are two stocks which I would be buying, but I would possibly wait for slightly lower levels, not at the current.